Chapter number 6 of class 8, combustion and flame. So let us begin. So before beginning, let us know what do you mean by combustion. So combustion is a chemical process, or we can say an oxidation reaction. Simply we can say it is a chemical process in which substance reacts with excess or sufficient amount of oxygen to release energy in the form of heat and light. Means in this process any substance we can take and it reacts with the oxygen and it gives energy in the form of heat and light. It is an exothermic reaction as it releases the energy. So the substance or the process in which energy is released, it is known as exothermic reaction. The substances which undergo combustion are known as combustible substance or fuels. And this property is known as combustibility. If generally I had to tell you its equation, so it's simply like this: substance plus oxygen releases CO2 plus heat and light. Heat plus light. So over here, heat and light are released in the form of energy. Now, what do we need for the combustion? So there are three things which we need for combustion, that are: first one is combustible substance. So first we need combustible substance for the combustion, that I was already saying that we need a substance that is combustible substance. Now what do you mean by combustible substance? The substance which can easily undergo the combustion. So that are known as combustible substance. Now second comes supporter of combustion. Supporter of combustion is oxygen. So oxygen we need. Now third is ignition temperature. So in the coming time we'll be discussing what do you mean by ignition temperature. So we'll be simply discussing about all these things. Now if we come to this only, then what is a supporter of combustion that we have learned. Now what do you mean by inflammable substances? So inflammable substances are the substances which can easily catches the fire and liberates energy in the form of heat and light. So this is a definition of inflammable substances. Now let us discuss about the ignition temperature. Now what do you mean by ignition temperature? So ignition temperature is the minimum temperature at which a substance catches fire and burns. So a substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. So we can say that suppose we are burning the substance and it is not catching the fire. So we can get the conclusion that the temperature of that substance is lower than its ignition temperature. Now, different substances have different ignition temperature. We cannot say that all the substances have this ignition temperature only. So, सभी substances के अलग अलग ignition temperature होते हैं, जैसे कि सभी हमारी सभी फिंगर्स अलग अलग लेंथ की होती है, सेम वे सभी substances की अलग अलग ignition temperature होता है. Example, the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. We can simply say that the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. Now, as I have already told, what do you mean by inflammable substances that have low ignition temperature and can easily catch fire with a flame? Example, petrol, alcohol, LPG, CNG, etc. etc. So this is
Simply, what do you mean by inflammable substances? What do you mean by ignition temperature? In both of these examples are given. Now let us discuss what are the types of combustion. So there are three main types of combustion जो कि है rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. So let us discuss about first, that is rapid combustion. So rapid combustion is the combustion in which substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat, not with the help of internal, with the help of external heat. Example, burning of LPG. Spontaneous combustion is a combustion in which substance burns spontaneously, means on its own it burns without any external movement or without any these things. So it produces heat and light, and as I have told, without any external heat or any without any external movement, it catches the fire. For example, we can take phosphorus burns spontaneously at room temperature. We can even say sodium and potassium are captain kerosene because they leads to spontaneous combustion. As we will keep it outside and exposed with the air and water, they'll simply catch the fire. That is why it will lead to the spontaneous combustion. So we can also take sodium and potassium in the case of spontaneous combustion. Now, explosion. In this, the substance suddenly burns and produces heat and light, and even sound it produces. We are learning in this first two, we have learned it produces heat and light only. But in third, it produces sound even, such as explosion of crackers or applying heat and pressure. Now, we will discuss what do you mean by flame. So generally, flame is a reason where the burning of gases takes place with high illumination and light. So flame is a reason, we can say, where the burning of gases take place with the illumination of heat and light. So here burning of gases takes place. Simply we can say. Now, generally, the substance which contain volatile components, they only burns with flame. Sometimes the question come tell that either the substance burns with flame or not. So simply you can see that it has volatile components or not. If it does not have, it does not burn with flame. If it has, then it burns with flame. Now what do you mean by volatile components? So volatile components वो होते हैं जो कि वेपराइज इजीली हो जाते हैं, जो कि इजीली वेपराइज हो जाते हैं, that vaporize easily. So these are the volatile components. So simply इससे हम कंपेयर कर सकते हैं. अब आते हैं zones of candle में. So there are generally three zones, that is outer zone of complete combustion, means यहाँ complete combustion होता है, ये बहुत hottest zone है, इसका color blue होता है और यहाँ maximum oxygen is available, मतलब यहाँ oxygen की amount बहुत ज़्यादा होती है as compared to these two zones. So ये है हमारा second, that is middle zone of partial combustion. तो ये moderately hot होता है as compared to first one. ये कम hot होता है. ये partial और incomplete combustion of fuel भी कहलाता है. So means यहाँ incomplete combustion होता है. So that is why only we call it incomplete combustion of fuel or something like this. So यहाँ incomplete combustion take place होता है. And there is insufficient amount of oxygen. So यहाँ insufficient amount of oxygen होती है. Now अब आते हैं हम simply innermost zone of candle पे. So insufficient oxygen, as I already told.
सो यहाँ इनर मोस्ट जोन में क्या होता है कि यहाँ बहुत कम हीट होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये इनर मोस्ट जोन होता है और ये डार्क ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का, और यहाँ कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, सो हेयर नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ब्लैक कलर का होता है, वो भी कौन से, डार्क ब्लैक, so it is of dark black color, we can simply say, and यहाँ ऐसे, यहाँ पे डार्क ब्लैक ऐसे होता है। और अगर हम देखें तो इसका टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट वन का, और यहाँ का सेकेंड वन मिडिल जोन का होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपली आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। सो गुड फ्यूल के पास हमें पहले गुड फ्यूल से डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं फ्यूल होता क्या है। सो फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग। सो जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करने बर्निंग पर, इट इज नोन एज fuel. So it is a kind of a substance which act as a source of energy on burning. So here I have written source of burning. Instead of burning, energy will come. Simply. Now, this is a fuel. Fuel are existing in three states, that is solid, liquid and gaseous. So in three states में fuel exist करते हैं। सोलिड हम कह सकते हैं जैसे कि कोल, चारकोल, तो ये एक फ्यूल है। लिक्विड हम कह सकते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तो ये सब क्या हो गया, लिक्विड। अब गैशियस में सीएनजी, एलपीजी, दीज कम्स इन गैशियस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, तो इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है, और लो मॉइस्चर कंटेंट होता है, लो एश कंटेंट होता है, और मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन होता है, और क्या कहते हैं, शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये कोई हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, लो कॉस्ट होता है, इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इजी कंट्रोलेबल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू? So calorific value, we can simply define calorific value by one definition, that is, it is defined as a heat produced by burning 1 kg of any fuel. Suppose हमने 1 kg कोई भी fuel ले लिया, और जब हम इसे बर्न करते हैं, सिंपली जब हम इसे बर्न करते हैं, तो इसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस की जाती है, तो वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम, और जिस फ्यूल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो बेटर फ्यूल होगा। सपोज चारकोल की होती है कैलोरीफिक वैल्यू 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम, तो ये होती है हमारी चारकोल की। फिर ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की देखें, तो हाइड्रोजन की होती है 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू, 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसमें हाइड्रोजन बेटर फ्यूल है एज कंपेयर टू चारकोल, बिकॉज उसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। Now let us move to harmful effects on the environment due to burning of fuels. तो इसमें जब हम फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज करते हैं, तो इट बर्न करते हैं, तो ये क्या रिलीज करते हैं, अनबर्न कार्बन रिलीज करते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस कोज करता है, जैसे कि अस्थमा। दैट इज व्हाई पीपल हैव अस्थमा।
Now, second is incomplete combustion of fuel releases carbon monoxide gas. That is CO. So, carbon monoxide gas का symbol है CO, which is very poisonous gas and which can cause death. So, if incomplete combustion of fuel होता है तो वो क्या रिलीज करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है जो कि बहुत पॉइजनस गैस है और ये डेथ भी कॉज कर सकती है. Now, burning most of fuel releases carbon dioxide gas, as we already know, which causes rise in the temperature of atmosphere. So, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है उसमें राइज आ जाता है और इसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग. So, due to the release of harmful gases such as CO2, there is a sudden rise in the temperature of an atmosphere, and this is known as global warming. इसकी वजह से कई बार फ्लड्स भी आते हैं. क्यों आती है? क्योंकि जो पोलर आइस होती है वो पिघल जाती है. उसकी वजह से जो सी का लेवल है वो राइज हो जाता है. अगर आइस पिघलेगी तो सी का लेवल ऑब्वियसली राइज होगा और उसकी वजह से फ्लड्स आ जाएंगी. That is why only like in the Uttarakhand right now, a few 1 month I think it has been passed. So there over there this flood come because the glacier melts due to this purpose only. Now, burning of coal and petroleum releases oxides of sulfur and नाइट्रोजन. जब हम कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज करता है जो कि रेन वाटर में जब वो डिसॉल्व होते हैं तो वो एसिड रेन फॉर्म करते हैं. एंड द एसिड रेन में ऐसे ही कहता है फर्स्ट बारिश में हमें नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो एसिड रेन होती है. It is harmful for us even, for crops even, for buildings even, and for soil even. So मतलब वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती है, सबके लिए harmful होती है. So these are the harmful effects of on the environment due to burning of fuels. Thank you. Please do subscribe the channel, like and share the video.